Hey everyone, welcome back to the channel. My name is Anuj, and today we are going to understand how do we exactly solve a Rubik's Cube. So, I think everybody has wanted to at least solve this puzzle once in their lifetime, and today I'm going to help you understand how you can do that because today I was searching for something and I happened to find this. And to my surprise, I just had forgotten how to solve this. So apparently, I tried to search on YouTube to understand how do you solve a Rubik's cube, and it was just so confusing. Everybody just makes it super complicated to even solve a Rubik's cube. It is not complicated, and I can assure you, by the end of this video, you would have solved your first Rubik's cube if you haven't solved that already. So don't worry, I'm here to help you understand what exactly is this Rubik's Cube and how can you learn to solve it, what exactly this is, how does it move, different steps, very simple, solve it side by side and you will know everything. Thank you so much. Let's get started with it. Alright, so here we have our Rubik's Cube and I'm going to show you what exactly this Rubik's Cube is. So like I said in the beginning, Rubik's Cube consists of 3 layers. This one is called the bottom layer, then we have middle layer, and finally we have top layer. Okay, so we have 3 layers. Then we have 6 faces. So as you can see, face 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Okay, so we have 6 faces in a Rubik's Cube, and let's talk about the components which are there in a Rubik's Cube. So we have a corner piece. Corner piece will always have 3 colors to it. Okay, as you can see, this one has orange, blue, and yellow. Then we have center pieces, they do not move. So for example, white will always be opposite to yellow. No matter how do you change, आप कैसे भी इसको change कर लो, does not matter. Yellow will always be around or the opposite of white. Same thing applies to all the centers that we have. So we have 6 centers. As you can see, we have yellow. Opposite to that, we will have white. So basically, you have 3 types of pieces: corner piece, center piece, and edge pieces. Edge pieces have 2 colors, center has 1 color, corner pieces has 3 colors. Okay, that is enough. Now, this is a Rubik's Cube, and we are going to solve it layer by layer. But before we start, I need you to understand the lingo or the notations, because these are very basic notations that you need to understand if you really want to solve a Rubik's Cube. I recommend that you hold a Rubik's Cube in your hand and solve it side by side with me so that you can solve it by the end of the video. But that's up to you. Now, I'm going to show you the algorithms, okay, but the notations, which is very important. Okay, so let's suppose you have this Rubik's Cube at your hand, okay, you're holding it like this. So I need you to understand that this face right in front of your face, this is your F as in front. Okay, if you're holding it like this one is the top face, front face, top face, right face, this is the right face, this is the left face, and this is the bottom face. Now the two moves I'm going to show you are going to be very important. Right algorithm is when you hold it like this and the right face is going to be moving. So up, right, down, left. Simple. I'll repeat. Up, right, down, and left. This is called right algorithm. When the right face is moving and the upper face is moving. So basically, if I explain it in a complicated way, the right face is this. So it goes clockwise, upper face goes clockwise, right face again goes anti-clockwise, and top face goes anti-clockwise. So this is the algorithmic way for explaining it. Simple way: up, right, down, left. Left algorithm: up, left, down, right. Up, left, down, right. So this is left algorithm. Alright guys, so now we are going to show you how do we solve the Rubik's Cube, the first step. Now that we understand the notations and the steps that we have to use, let's begin. So how you want to start is you want to make sure that you are starting with the yellow face on top. So you have to find the yellow dot anywhere. As you can see, this is complex. So you take the yellow piece and you have to make a daisy. Daisy is like you have the yellow piece and you have the white edges. The edge is like 2 colors, so you have already one. So we are going to find other edges. So let's find. So we can feel one edge is here. So let's solve it. So we can move and you can see I have one edge here, two edge here. So one more is here. So we can make it like this. And now we have it this. So move it until it is aligned. With just a basic navigation, you can find it. So as you can see, one edge is here. So I'll hold on to this, hold on to this, hold on to this, hold on to this. Now, and now this will come at the top. So this is your daisy.
Now the daisy is, it does not require any algorithm, any steps. You just have to make sure that you can just move basic steps and find the white edges and yellow center. This is your daisy. Now we'll move on to the next part, which is solving the first layer. Now this is important. This is your top layer and we are going to solve the bottom layer first. To solve it, what you want to do is you want to hold on to the first layer like this, and every edge will have a color. You want to move the last two layers. Okay, hold on to the daisy, move on until you find the center to the edge piece. Once you found it, this piece will go 180 degrees. So from top to bottom. Okay, to the next edge piece you have red. So I'll move the centers until I find the center. I'll move it 180 degrees. Next piece we have green. So move it until you find green. Green is aligned, move the piece 180 degrees. Then we have blue. So you want to find blue. Center is aligned, move it 180 degrees. Initially we had white faces here. Now that we did it, so you will have the bottom layer like this. You'll have a white cross at the end, but it's not just a white cross. The white cross that has the center aligned, because I told you centers do not move. So centers are aligned, which means now the only thing which we need to solve is the corner pieces. As soon as you solve the corners, the white layer will be solved. So let me show you how you can do that. Every corner has three colors. So as you can see, I already have white. So at the bottom, I have white color. So I only want corners that have white colors to it. So we'll pick this one. This one has red and blue. So this one needs to be red, blue and white. So as you can see, red, blue, white, red, blue and white. So this corner is at the right place. You want to make sure that the corner it should be on the top right. Top right. It should not be here, not here, not here, anywhere at the top right, facing you. So this is called corner swapping. If you want to do corner swapping without disturbing the cube, we have to follow an algorithm, which is the right algorithm. To perform the right algorithm, whatever corner you want to perform, let's suppose swap, you want to make sure that that is facing you. This is going to be the right face. So hold on like this. This should be the right. Now up, right, down, left. You want to continue doing this. If you do this 6 times, the puzzle will go back to its original form. 2, 3, 4, 5, 6. As you can see, I was still at the same position because this particular corner was at the top right. So if you perform this like 6 times, so if you got confused, count it till 6 and you will have the same exact cube like it was. So now I'm going to move this corner to this part. How do I do this? Up, right, down, left. Is it gone? Yes, it has. So you can see that the white cross was already here, but now the corner is coming here. Okay. So this corner is solved. Now we will find this corner, which is red, red, white, and green. So this corner is not at the right place. So what you want to do is put it like this, or I have this one, orange, red, and white. Make sure the centers are aligned. So you have orange, green, and white. Orange, green, white. So now to move this corner from here to here, what we want to do, right face. So up, right, down, left. Up, right, down, left. I can still see here, up, right, down, left. Now what happened? As you can see, this corner is right here. Now we'll move on to find one more column. I have this one. So because it's already here, but it is twisted corner. As you can see, these two corners are twisted. Okay. So what I want to do is I want to have it on the right face and just swap any corner. 1, 2. As you can see, this is the wrong corner, but I'm doing this for purpose. So once again, I'll do it. So now I have this corner at the right top. So I'll move it until I find the right corner. So I have green and red. So as you can see, green, red, and now it's white. This corner needs to go here. So once again, up, right, down, left. Up, down, up, right, down, left, up, right, down, left, up, right, down, left. This one is on the wrong place. This is solved. Now we have to solve this one. So up, right, down, left, up, right, down, left, up, right, down, left, up, right, down, left, up, right, down, left. Now, as you can see, once you're done, the first layer is solved.
This is how you solve the first layer. Okay, I'll show you how do we solve the second layer in the next part. Guys, now that the first layer is solved, the bottom layer is solved for us, we want to start with the middle layer. To solve the middle layer, all you want is to make sure that your edge pieces will be solved. Now what we are going to do is, we are not going to touch any edge pieces that have yellow color on it. So this is orange and blue. We can work with this. Not this, not this, not this. Okay. So let's figure it out what we want to do. So this is blue and orange. So you want to move it until, and yes, when you're moving, make sure that your bottom layer is not disturbed. You do not want to disturb these two layers. So move it like this until the blue center is aligned. Now you have orange piece on the top. Orange and blue. That means this part is aligned. You can move this part either on the left or on the right. Because orange is on my left, I want this piece to go on my left. So this piece is orange and green. Orange is aligned, so green can either go on the left or on the right. I know that this is going to go on the left hand side. To make this piece go to the left, first step is move it to the opposite direction. So left का opposite, right, top pose will go right. Now left में जाना है तो left algorithm होगा तो 1 2 3 4. लेफ्ट में जाना था तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट में एक बार इसको मूव कर देंगे. राइट एल्गोरिथम 1 2 3 4. If you move back, you can see this piece is now here. This piece, as you can see, is incorrectly placed. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस येलो पीस को यहाँ पे लेके आएंगे ताकि ये पीस यहाँ से निकल जाए. तो इन दोनों को हम बेसिकली स्वैप कर रहे हैं. इस पीस को हमें राइट में लाना है तो उसका ऑपोजिट डायरेक्शन क्या होगा, लेफ्ट. सो वी विल मूव द टॉप फोर्स टू दी लेफ्ट. राइट में लाना है तो पहले राइट लेयर परफॉर्म करेंगे 1 2 3 4. राइट में क्या करेंगे, इसको मूव करेंगे और अब लेफ्ट परफॉर्म करेंगे 1 2 3 4. अब अगर आप देखोगे तो ये येलो वाला पीस यहाँ पे आ चुका है और हमारा जो टॉप ब्लू लेयर था वो हम यहाँ पे अलाइन कर लेंगे. नाउ दैट वी हैव दिस पीस फ्री, तो अभी ये रेड पे है तो या तो ये राइट पे जाएगा या लेफ्ट पे जाएगा. रेड मेरा राइट में है तो मैं इस पीस को राइट में लेके जाऊँगा. राइट में ले जाने के लिए अपोजिट ले जाओ, विच इज़ लेफ्ट. जिस डायरेक्शन में लेके जाना है परफॉर्म करो 1 2 3 4. राइट में मूव करो लेफ्ट and you have this piece on the place. Then we have red and green. Green wants to go on the right. Right में जाने के लिए top layer will go to the left. Right में ले जाना तो पहले right करेंगे, फिर right swap, फिर left करेंगे. तो right algorithm 1 2 3 4. right में move करेंगे 1 2 3 4. Now the moment you are done, you can see that 2 layers are solved. Simple. We have solved 2 layers. Okay, and I try to kept it very simple. So अभी 2 layers हमारी solved हो चुके हैं. We'll move on to the last part, which is the third layer, and I'll show you how to do it. Alright guys, so now that your bottom 2 layers are solved, we'll move on to the third layer or the top layer. तो यहाँ पे top layer में आपके पास 3 situations होता है. या तो you will have the top center only, which is yellow part, or you will have a L shape, which is L like this. यहाँ पे नहीं है. Or third, you will have a horizontal line. Okay, you might also have a cross, which is the final goal that we have. तो अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, we will make sure कि अगर हमारे पास ये लाइन आ रही है तो line must be horizontal, which means we will not disturb the line. And the algorithm we are going to use is going to be F R F dash. F means this is the front face. तो आप वो फ्रंट क्या है, ये वाला है या फिर ये वाला है, आप कोई भी फेस यूज कर सकते हो. एज लॉन्ग एज दिस लाइन इज नॉट डिस्टर्ब, इट्स फाइन. तो या तो आप यहाँ से यूज कर लो या तो आप यहाँ से यूज कर लो, दैट्स फाइन. बट ये वाली लाइन आप डिस्टर्ब नहीं करोगे. तो लेट्स सपोज मैं ये वाली लाइन यूज कर रहा हूँ. तो दिस being on the front screen, the front layer. तो F, which means it's rotated in clockwise direction. Okay, perform right algorithm, which is 1, and then move back anti-clockwise. So now you have the white cross, yellow cross. Now the yellow cross, when you have it, I'll move on to the next step, which is how do we solve the yellow corners. तो अभी अगर मैं आपको सिचुएशन दिखाऊंगा तो येलो कॉर्नर्स मेरे पास येलो क्रॉस आ रखा है, बट ये जो कॉर्नर पीसेस हैं दे आर इनकरेक्टली प्लेस्ड. ये ट्विस्टेड कॉर्नर्स होता है. तो जैसा आपको दिख रहा है कि येलो के साथ हमारे पास रेड और ग्रीन है, बट यहाँ मुझे ब्लू और रेड चाहिए, तो यहाँ पे ग्रीन और रेड है, तो ये कॉर्नर इनकरेक्ट है.
ये कॉर्नर यहाँ पे होना चाहिए। अब ये दिख रहा है आपको ब्लू और रेड है, सो दिस कॉर्नर नीड्स टू बी हियर, दिस नीड्स टू बी हियर। तो ये कॉर्नर्स को स्वैप कैसे करते हैं विदाउट डैमेजिंग और डिसरप्टिंग द क्यूब, आई विल शो यू द नेक्स्ट पार्ट, मेक श्योर दैट विल टेक आउट। Alright guys, so now that we have solved the last two layers और हमारा येलो क्रॉस भी आ चुका है, तो we'll move on to the next part wherein we are going to make sure कि हमारे corners aligned हैं। तो corners के लिए हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे हमारे corners aligned हैं कि नहीं है। तो सबसे पहले I'll check this part wherein you can see कि ये corner जो हमारा है वो ऑरेंज और ग्रीन सही जगह पे है। अब ये वाला जो है रेड, ब्लू और येलो है, तो रेड ब्लू इज नॉट एट द राइट प्लेस, ग्रीन रेड इज नॉट एट द राइट प्लेस। लेकिन अगर आप रेड के साथ अलाइन करके देखोगे तो ये दोनों रेड के हैं और ये रेड सेंटर के साथ अलाइन है, मतलब ये दोनों कॉर्नर्स बस स्वैप करने की नीड है एंड यू विल हैव दीज टू कॉर्नर्स करेक्टली। क्योंकि अगर आप ये वाला फेस देख रहे हो तो ब्लू ऑरेंज इज एट द राइट प्लेस, ग्रीन ऑरेंज इज एट द राइट प्लेस। तो हमारे कहने का मतलब है कि ये दो कॉर्नर्स जो है हमारे ऑरेंज वाले ये सही है और इन दोनों को हमें स्वैप करना है। तो स्वैप कैसे करते हैं अब हम उसको वो देखने वाले हैं। स्वैप करने का जो हमारा एल्गोरिथम है बहुत ही सिंपल है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, जो हमारा फेस है जहाँ पे ये दो कॉर्नर्स है जो मुझे स्वैप करना है वो मेरा राइट हैंड पे होने चाहिए। ओके, तो आई प्लेस इट लाइक दिस, जहाँ पे राइट हैंड पे ये दो कॉर्नर्स है जो मुझे स्वैप करना है विदाउट डिसरप्टिंग द क्यूब। तो मेरा जो एल्गोरिथम होगा वो होगा 3 टाइम्स राइट। ओके, 3 टाइम्स राइट यानी कि राइट फेस क्या होगा, राइट फेस जो मेरा होता है 1, यानी कि अप, राइट, डाउन, लेफ्ट, ये हो गया 8। तो मैं इसको 2 बार और करूँगा, 1, ये मैंने कर लिया 3 8। अब मुझे क्या करना है, स्वाइप राइट, यानी कि मुझे इसको एक बार राइट स्वाइप करना है। अब मुझे 3 बार लेफ्ट एल्गोरिथम परफॉर्म करना है। तो 1 2 3 4। अब इसको 2 बार और करूंगा तो 1, ठीक है। अब जब मैंने इसको ऐसे कर लिया तो आपको दिखेगा कि रेड वाले जो कॉर्नर्स थे वो मेरे अलाइन हो चुके हैं। अब आपको कैसे हो गए तो मैं दिखाता हूँ कैसे। अगर मैं इसको मूव करूंगा तो अब ये कॉर्नर रेड वाला है जो ग्रीन के साथ अलाइंड है, रेड ग्रीन जो करेक्टली प्लेस्ड है। ब्लू, ब्लू और रेड ये भी करेक्टली प्लेस्ड है। ऑरेंज ब्लू सही आ चुका है, ऑरेंज ग्रीन सही आ चुका है। अब बेसिकली मेरे कहने का मतलब क्या है कि हमारी जो 2 लेयर्स हैं वो सॉल्व हो चुके हैं, बट ये जो कॉर्नर्स हैं अब मेरे कॉर्नर करेक्टली प्लेस्ड हैं, मतलब ट्विस्टेड भी होने चाहिए। अब आप कहोगे यार फेसिंग तो अलग अलग है, तो वो हम सॉल्व करने वाले हैं नेक्स्ट स्टेप में। बट अभी के लिए हमारा गोल जो था वो था कि कॉर्नर्स हमारे सही जगह लाइन है, भले वो ट्विस्टेड है। तो कॉर्नर्स को हमने स्वाइप कर दिया, अब हम बस रेड ग्रीन की जगह पे है, सारे कॉर्नर सही है। तो आई शो यू द नेक्स्ट पार्ट कि इसमें कैसे करना है। Alright guys, so now we are going to show you कि हमारे कॉर्नर्स अलाइंड हैं। तो अब कॉर्नर्स को हम इसको येलो फेसिंग कैसे करेंगे। तो येलो फेसिंग करने के लिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हम किसी भी एक पोर्शन को उठा देंगे जहाँ पे येलो फेसिंग नहीं है। येलो फेसिंग हमारा डाउन होना चाहिए। तो अब यहाँ पे आप देखोगे एक ये है, एक ये है जो हमारा इनकरेक्ट है। हमारा गोल क्या है, हमारा गोल है कि ये येलो पीस नीचे की तरफ जाना चाहिए। तो आपको क्या करना है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, अगर यहाँ पे आपने मिस कर दिया तो ये पूरा गेम आपका ओवर हो जाएगा। व्हाट यू वांट टू डू इज यू वांट टू मेक श्योर कि आपके जो टॉप 2 लेयर्स हैं ये आपको डिसरप्ट नहीं करनी है, बिकॉज दैट इज द आर्ट। सो जो भी पीस आप सॉल्व कर रहे हो वो आपके बॉटम राइट में होना चाहिए, टॉप राइट में नहीं, बॉटम राइट में होना चाहिए। आपको क्या करना है, यहाँ पर राइट एल्गोरिथम परफॉर्म करना है जब तक ये ब्लॉक नीचे ना चला जाए। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज आपको पूरे प्रोसेस के टाइम पे ये 2 लेयर्स चेंज या टच नहीं करनी है। तो फॉर एग्जांपल मैं इस पूरी लेयर को होल्ड कर लेता हूँ एंड आई विल मेक श्योर कि मैं इसको चेंज नहीं कर रहा, केवल मैं क्यूब की पोजीशन चेंज नहीं करूंगा। तो नाउ आई वांट दिस क्यूब टू गो डाउन, परफॉर्म राइट एल्गोरिथम। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये ब्लॉक मेरा येलो ब्लॉक नीचे चला गया, बट हो गया, सब खराब हो गया। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि डोंट चेंज द पोजीशन ऑफ द क्यूब, होल्ड इट। आपको क्या करना है, बॉटम लेयर आपको चेंज करनी है। अब मुझे एक और येलो ब्लॉक दिखा है जो गलत पोजीशन था, इसको नीचे होना चाहिए। तो व्हाट आई डू, परफॉर्म द राइट एल्गोरिथम, और जैसे ही मैं ये करूंगा तो सब वापस से अलाइन हो जाएगा। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, एज यू कैन सी सारे येलो पीसेस नीचे आ गए और मेरे कोई भी लेयर डिस्टर्ब नहीं हुए। ठीक है, तो दैट्स जस्ट मैथमेटिक्स, पूरा एल्गोरिथम्स का परम्यूटेशंस का गेम है। तो आपको जैसे इसमें दिख रहा है कि इसमें कोई चेंज या हमने कोई चैलेंज करा ही नहीं है। ठीक है, इट्स वेरी सॉर्टेड। अब आपको यार ये क्या हुआ, ये तो हमारा ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया, बट ये हमारे 2 पीसेस इनकरेक्टली स्वैप्ड है, इनफैक्ट 3। अब ये जो पोजीशन हमारे पास आता है, दिस इज द फाइनल गोल, विच मीन्स अब आपको क्या करना है, हमने येलो क्रॉस बनाया, हमने कॉर्नर्स को अलाइन किया, अब हमारे पास एज पीसेस बचते हैं।
तो इन दिस सिचुएशन यू हैव टू प्रॉब्लम्स। नंबर वन, कि हो सकता है कि आपके दो पीसेस अलाइन होंगे, दो अलाइन नहीं होंगे, या तो हो सकता है कि आपके कोई भी पीसेस अलाइन नहीं होंगे, केवल एक अलाइन होगा। तो हमारे केस में केवल एक पीस ऐसा है जो अलाइंड है। ठीक है, तो नाउ वी आर द फाइनल फेज, और मैं आपको इसको आंख बंद करके सॉल्व कर सकता हूँ। तो आई एम गोना शो यू कि कैसे करना है। और आई गेस सो नाउ इन दिस पार्ट, लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि कैसे हमने येलो क्रॉस से अपने कॉर्नर्स को अलाइन किया था, एंड देन वी वांटेड टू मेक श्योर कि हमारे एज पीसेस भी अलाइन होने चाहिए। कॉर्नर्स हमारे अलाइन हो गए, हमने उसको ट्विस्ट कर लिया। अब हमारे पास हमें लास्ट स्टेप आता है विच इज द एज पीसेस। एज पीसेस को सॉल्व करने का सिंपल एल्गोरिथम है। आपको क्या करना है, जो पीस आपकी तरफ पूरी तरह सॉल्व है, अगर एक फेस सॉल्व है तो आपको वो अपनी तरफ रखना है, फेस फेसिंग पे। अगर जस्ट इन केस ये भी सॉल्व नहीं हो रहा है और सारे के सारे पीसेस इनकरेक्ट हैं, तो आप कोई भी पीस ले सकते हैं। ठीक है, इन दैट केस आपको क्या करना है, एक बार राइट एल्गोरिथम, एक बार लेफ्ट एल्गोरिथम, 5 टाइम्स राइट, 5 टाइम्स लेफ्ट। रिपीट करो, एक बार राइट, एक बार लेफ्ट, 5 टाइम्स राइट, 5 टाइम्स लेफ्ट, एंड दैट इज इट। हो सकता है आपको ये दो बार करना पड़े, पर दैट्स इट। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। एक बार राइट, एक बार लेफ्ट, 5 बार राइट, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सॉर्ट।